At least 14 people were missing and dozens injured after torrential rain caused flooding in India's northern state of Uttarakhand. The downpour struck Chamoli district late on Wednesday night, sending torrents of water, mud and rocks through hillside communities and burying several houses under debris. ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है। Authorities said rescue teams, including state disaster response personnel, were deployed to search for the missing, clear blocked routes, and treat the injured. Earlier on Tuesday, landslides and heavy rain in the same state of Uttarakhand killed at least 15 people. Uttarakhand, a Himalayan state prone to floods and landslides, frequently sees extreme weather during the monsoon.